Now exam happening in multiple times. So there's a documentation on normalization which is being released by the DTE, by the CET cell. So what is say the normalization method is they are going to normalize. Now if I look at MHT CET, same is going to happen for MBA CET as well. MBA CET is going to happen in 6 slots. मैंने कल भी एक वीडियो डाला था कि मुझे जो चीज़ का डर है वो यही है कि नॉर्मलाइजेशन माइट इफेक्ट. Okay, let me first try to explain with this very simple way and then I'll try to explain in detail. Now you can go to cetking.com/normalization. You can check out the detail here. So I've given you very simple example here. Salman Khan, Amir Khan, Shah Rukh Khan. So slot 1, day 1 ko, slot 1 ko, all the actors have given the exam and these are the scores by the actors. Salman Khan is number 1, ठीक है, आमिर खान नंबर 2, शाहरुख खान नंबर 3, ऋतिक नंबर 4, फरहान अख्तर नंबर 5 एंड अक्षय कुमार नंबर 6. ठीक है, सो उनको हमने, इनका ये स्कोर है. हम स्कोर काउंट नहीं करेंगे, हम उनकी परसेंटाइल काउंट करेंगे. 2 लोग को 9.99, 2 लोग को 9.98, 2 लोग को 9.97. सेम वे स्लॉट 2 was given by all the sports person cricketers and these are the scores by the top 6 cricketers. 9.99 2 लोग, 9.8 पे 2 लोग, 9.7 पे 2 लोग. ठीक है, रैंक 1 to 6. स्कोर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इंडिविजुअल सेक्शन वाइज किसने कितना स्कोर किया है, किसी का टफ था, किसी का बेकार था, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं. एंड डे 3 वॉज ऑल द बिजनेसमैन, अनिल अंबानी, मुकेश होना चाहिए था यहाँ पे, all the 6 top businessmen. Now how will be comparing businessmen with actors and with sports person? So easy way out, सब रैंक 1 को इकट्ठा कर दो. इसका रैंक 1, इसका रैंक 1, सचिन will be combined together. इधर से सलमान. So if I combine them together, Sachin, Salman and Anil Ambani, we are not worry about the score, will become rank 1, 9.99. In our case 100 percentile. Even though Anil Ambani is only 141 marks, he is still more than MS Dhoni because Sachin ऊपर आ गया. चलेगा. That's why the coaching institute वाले, those who go and top the exam, become rank 1, they are going to affect the overall ranking of that particular section. ठीक है, अब आपको समझा. सो हर स्लॉट के टॉपर्स को इकट्ठा कर देगा रैंक 1, फिर स्लॉट नेक्स्ट रैंक 2, फिर रैंक 3, फिर रैंक 4. दिस इज हाउ दे आर जॉइंट. ठीक है, सो लेट्स लुक एट हाउ व्हाट दे हैव ट्रेनिंग, व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड अस फॉर दिस percentile calculator. So percentile will be calculated up to the 7 decimal places to avoid bunching effect or reduce ties. So mean suppose 99.99321 7 decimal places. अच्छा, उसके बाद भी, so that you can calculate the exact answer. So 100 into number of candidate appeared for the session, raw score less than the candidate score divided by total number of sessions. Okay, percentile is calculated in the following method. I'll explain that in detail. So they have given us this example here. Now we have day 1 batch 1, day 1 batch 2, day 2 batch 1, day 2 batch 2. For MBA, day 3 batch 1 and day 3 batch 2. There are total 6 sessions. ठीक है, highest marks is 154 for example in slot 1, slot 2 157, 149, 169. Now according to DT, this is the most difficult slot. This is the most easiest slot. Now there might be a possibility the score went 161 because one topper was a coaching institute wala, and that coaching institute wala went and topped the exam, and because of him everything went for the toss. The complete slot ka scoring went for the toss. But to keep things simple, what they've done now, the last year तक ना score, the normalization used to be happened as per the score. Here the normalization is going to happen as per the percentile. ये देखो अभी उसने क्या किया है कि the raw score is 154. ठीक है, highest score is 154. So he will become rank 1, he will become 100 percentile. फिर 99.99, 99.98 like that. स्लॉट 2 में 157 विद 100 परसेंटाइलर, बाकी सब उसके पीछे. स्लॉट 3 में 149 इज 100 परसेंटाइलर and 161 is 100 percentile. So what they've done is they've created a silos.
4 अलग टॉपर आएंगे, ठीक है। स्लॉट 1 का टॉपर, स्लॉट 2 का टॉपर, सेशन 3 का टॉपर, सेशन 4 का टॉपर, हर एक को इंडिविजुअली काउंट किया जाएगा अलग से, समझा आपको। सो टॉपर ऑफ दिस सेशन 100 परसेंटाइलर, 100 परसेंटाइलर, 100 100, ये चारों को 100 परसेंटाइल में काउंट किया जाएगा। फिर सेकंड वाले को 99.9999 में काउंट किया जाएगा, नेवर 98 97 लाइक दिस। दिस इज़ अ वेरी गुड वे, सो दे आर गोइंग टू कंसिडर रैंक वाइज।